Good, welcome back. So please. थैंक यू मनीषा। सबसे पहले तो सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है। मैं पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के अप्लाइड एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ इस इवेंट में, जिसका टाइटल है पोटेंशियल ऑफ मिलेट्स, न्यूट्रिशनल वैल्यू एज न्यूट्रास्यूटिकल एंड फंक्शनल फूड्स। इस प्रोग्राम में, इस इवेंट में डॉक्टर बैलन डाबी जो वैज्ञानिक हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद में, भारतीय कदम अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, ये काफी समय से मिलेट्स के क्षेत्र में कार्यरत है। उन्होंने काफी इसके रिसर्च की है। आज वो इसकी पोषकता के बारे में, न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में आप सभी के साथ अपने विचार साझा करेंगे, उनकी फाइंडिंग्स को अपनी शेयर करेंगे। इसकी उपयोगिता है भारत में अगर हम देखें लगभग 7 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटिक्स, यदि हम पंजाब में देखें तो 14 से 15% लोग डायबिटीज से ग्रस्त। अगर मोटापे की बात करें तो पंजाब में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 30 से 40% की जो जनसंख्या है वह मोटापे से ग्रस्त, ओबीस है, किसी में वजन ज्यादा है, कोई अत्यधिक मोटा। जब हम मिलेट्स की बात करते हैं, मिलेट्स में प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फाइबर अत्यधिक मात्रा में। मिलेट्स के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वे इजीली डाइजेस्टेबल है, जल्दी हजम हो जाते हैं, जल्दी एनर्जी देते हैं, अत्यधिक मोटापा नहीं करते। प्रोटीन्स की हम बात करें, ये न्यूट्रिशनली कुछ मामलों में पूरी तरह से बैलेंस नहीं है, परंतु इनमें जो विटामिन और मिनरल्स हैं मिलेट्स में, कदम में, वह अत्यधिक है। यदि हम मिनरल्स की बात करें, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, यह इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जबकि यदि हम बी विटामिन की बात करें, जिसमें नाइसिन, डाइजेस्टिव है, वह भी इनमें, फॉलिक एसिड वह भी इनमें पाया जाता है। यह सभी सेहत के लिए अत्यधिक उपयोगी है। इसके अलावा यदि हम इसका कुदरत पे देखें तो यह मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है। मिलेट्स के प्रोडक्शन में, मिलेट्स की खेती में कम मात्रा में खाद पड़ती है और ना के बराबर इसमें पेस्टिसाइड हैं। तो बहुत सारे ऐसे फूलें हैं जिनके अगेंस्ट यह काफी रेसिस्टेंट होती हैं, जो नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा यह ग्लूटेन फ्री भी, आजकल हम देख रहे हैं पूरी दुनिया लगभग ग्लूटेन फ्री फूड्स के बारे में बात कर रही है, या जो गेहूं के अलावा बना हो। एक्चुअली गेहूं में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिससे कुछ, सभी लोग नहीं, यदि हम आज के समय की बात करें तो लगभग 4 से 5% जो जनसंख्या है विश्व की, वो गेहूं के कुछ प्रोटीन से एलर्जिक है। परंतु मिलेट्स में वह प्रोटीन्स नहीं पाए जाते हैं, वह प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। इसीलिए जो मिलेट है, मिलेट प्रोटीन्स है, वो नॉन एलर्जिक है, तो इनसे कोई एलर्जी नहीं होती, वी आर नॉट एलर्जिक एक्चुअली, कोई एलर्जी नहीं करते हैं। तो यह भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक एडवांटेज है मिलेट कंजप्शन का। तो इसके साथ मैं आप सभी का स्वागत करूंगा और अब मैं माइक देता हूँ हमारे एडिटर को, ताकि वो हमारे जो आज एक्सपर्ट हैं उनको बुला सकें। इससे पहले वह हमारे फैकल्टी मेंबर डॉक्टर चैनल पाठक को बुला सकें हमारे गेस्ट के प्रोडक्शन के। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। सो जैसा सर ने कहा कि हम लोग सिर्फ राइस और व्हीट के ऊपर ही डाइट हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले, मतलब 1960 से पहले इधर के किसान सभी उगाते थे, बाजरा उगाते थे, कोटो, मिलेट, फॉक्सटेल और भी अलग अलग टाइप के मिलेट्स इधर कल्टीवेशन होता था। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन बाद में व्हीट का
हो गया, भी आ गया। एंड नेक्स्ट हमारा डाइट में सिर्फ इधर नॉर्थ इंडिया में गेहूं की रोटी खाते हैं और साउथ इंडिया में मेजरली राइस खाते हैं। तो हम ये जो मिलेट्स है उनको भूल गए। तो इसीलिए अगले साल 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स करके डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशंस में। सो आजकल ये पाया भी है कि सीलियाक डिसीज करके 5% लोगों में पाया जा रहा है नॉर्थ इंडिया में। तो सिर्फ गेहूं में जो ग्लूटेन रहता है उसका अलग ही रहता है। सो इसीलिए इसको बढ़ावा मिलेट्स कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स करके ऑब्जर्व कर रहा है। इसलिए आज का जो गेस्ट है डॉक्टर आम सीता बेडन के उनका इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंसेस धारवाड़ कर्नाटक उधर से बीएस एग्रीकल्चर किया एंड नेक्स्ट बाद में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली उधर एमएससी और पीएचडी इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग किया। और उसके बाद उन्होंने एज ए साइंटिस्ट उन्होंने ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद में 2015 में। एंड नेक्स्ट उन्होंने अलग अलग काम कर रहे होते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ मिलेट और ग्रेन यील्ड एंड हाई बायोमास। और उन्होंने कुछ दिया डायनेटिक चेंजिंग लाइन्स which are in pipeline release of release to AICR small millets in barnyard millet। और इन्होंने he serving as institute as co-owner of trials and nurseries from sorghum, co-owner of TUS and TD and FRA project, member secretary institute germplasm identification committee। और मोर देन 50 यूनिक germplasm बाय उन्होंने रजिस्टर किया है एनबीपीसीआर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च न्यू दिल्ली के साथ। एंड he is having 3 sorghum varieties, 1 single cut forage sorghum variety and 1 high biomass sorghum variety। और इनको बेस्ट यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला है 2020 में और 2 बेस्ट ओरल प्रेजेंटेशन अवार्ड से मिला है और सिल्वर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में रिसर्च पेपर्स पब्लिश किया है। सो आपके समय बिना वक्त हम नेक्स्ट विल मूव टू द नेक्स्ट प्रेजेंटर। So, Dr. Ashish Reddy, thank you for the introduction. Thank you very much, then, Barley sir, for this. Am I audible, sir? Yeah, you are visible. You can share your way. Yeah. Am I audible, sir, clearly? Clear? Okay. Thank you very much, sir, for this opportunity to present the nutritional value of millets as nutraceutical properties and also as functional foods. Before starting, respected Professor Raghavendra P. Tiwari sir, Honorable Vice Chancellor, Central University of Punjab, Professor Anjana Munshi, Director RMG, Dr. Chidanand Patil, today's program coordinator, and other scientific and teaching fraternity of the University of Punjab, and dear students and सभी किसान साथियों, आप सबको सादर प्रणाम। मैं ज़्यादातर इंग्लिश में ही बोल दूंगा। इफ यू आर हैविंग एनी questions we will take up in the last after this session, particularly with farmers in cultivation of millets. So to start with, I will share my screen first. Sir, my screen is visible, sir. Hello. Screen is visible. Yeah. Shall we start, sir? Shivanand, sir. Hello, sir. Shall we start? I will start my presentation. I hope my voice is clear to all. Yes, welcome to all. We are here to cultivate
Hello. Hello. Someone reply me. Hello. Yes, sir, your voice is clear to us. Yeah. Okay. Thank you. We are here to cultivate the diversity with 8 different millets and provide justice to the neglected crops like millets, and also address the issues of resilience, that is changing environmental and environmental concern of heat and drought stress, and also addressing heat and zero hunger things with to address the malnutrition through sustainable nutritional security. It is a really excellent topic which has been assigned to me for today's presentation, that is potential of millets, their nutritional value as nutraceuticals and functional foods. Myself, Dr. Amasita B, working as scientist in the Division of Genetics and Plant Breeding at the Indian Institute of Millet Research, Hyderabad. Before going to detail into the nutraceutical and functional food values of millets, Sir, you are not audible. so now, You're not sir, No, we you're have not the audible, first sir. slide. audible. Sir, my first slide is visible now. Okay, sir, I got your message. Thank you. Yeah, we are here to cultivate the diversity of 8 different millets and to provide justice to the millets to ensure their place in the global food basket, and also to address the resilience nature of these millets, specifically for heat and drought stress, and also to address health and zero hunger, and also malnutrition through sustainable nutritional security. Yeah, the today's topic which was assigned to me was really excellent because it is a the potential of millets, their nutritional value as nutraceuticals and functional foods. Before going details into the nutraceutical and functional foods of these millets, I will take you to introduction of these millets. Presently, we are working on 8 different millets, including 2 major millets, sorghum and pearl millet, and 6 small millets, finger millet, foxtail millet, proso millet, barnyard millet, little millet, and kodo millet. Total, these are 8 millets which we are working on, specifically on their basic and static research, and also nutrition and health benefits of these millets to address the nutritional security. Yeah, to introduce these millets, these are the oldest and the first crops which are to be domesticated, and these are considered as small seeded cereal grasses. And they are rich in protein, fiber, vitamins and minerals, and many more, phenolics, flavonoids, etc. All these things, they play a role as antioxidant, anti-inflammatory, and anti-proliferation of tumors, that is anti-carcinogenic in nature. They can withstand the vagaries of weather and produce high biomass. That means they are tolerant to changing climatic scenarios, and they are considered as climate resilient because recovery after irrigating or recovery after reducing is very high in these millets after subjecting to drought or heat stress. That's why these crops are called as climate resilient. And they possess C4 pathway of photosynthesis. Sir, slides are not moving, sir, but here slides are moving in my laptop. Hello? Yes, sir. Sir, can you listen? Am I audible to you? Hello? Sir?
Sir, 1 minute, sir. Again, I will try because sir is telling that it is my slides are not moving. तुम्हारा जीमेल में ओपन Sir, give me 2 minutes, sir. I will be back. ओपन कर दे, चेयर स्ट्रेट कर दे तो हो गया ना। हाँ, चेयर गूगल मीट हो गया। नहीं गूगल मीट होगा। ठीक है, सोर्स गूगल मीट में श्योर। Sir, now it's moving. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಹಂಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಹಾ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ನಾವು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಸರ್? Yes, sir. Yes, sir. Moving? Moving? Yes, sir. Okay. Thank you, Sandy. Yes, okay, Sandy. Okay, sir. Sir, now I am in third slide, I hope.
We were seeing 8 different millets. Okay, it's okay. Sir, we are working on 8, including 2 major millets. That is, one is sorghum and pearl millet, and including 6 small millets. That is finger millet, foxtail millet, proso millet, barnyard millet, little millet, and podo millet. So coming to the introduction, these millets are oldest, and the first these millets, and these are called as small seeded cereal grasses, and they are rich in protein, fiber, vitamins, and minerals. And they play the role as antioxidants, anti-inflammatory in nature, and anti-proliferation of tumor cells. That is anti-carcinogenic. Along with these are having many other different functions, which we will deal later, and I will tell you in slides. So these can withstand the vagaries of weather and produce the high biomass. That's why these are called as the climate resilient crops. Specifically, the recovery rate of these millets is very high once we resume the irrigation or once the temperature at drought stress comes down. That's why these are called as the climate resilient. That's why they give a good amount of yield even in stress conditions. And they possess the C4 type of photosynthesis. That's why they are having high efficiency in absorbing and also utilizing the carbon dioxide, which is present abundantly in the atmosphere. We can see these different 8 names which are given in this slide, including sorghum and pearl millet in upper portion, and all 6 millets down here. Finger millet, for how their pan looks. They are having, they are called with different names in different states in different languages. So I will be talking in Hindi, which is suitable for Punjab and Haryana. There we call sorghum as jowar, pearl millet as bajra, finger millet as mandua or ragi, little millet as kutki, kodo millet as kodo, foxtail millet as kangani or kakun, barnyard millet as sawa or jangoa, proso millet as barri or chena. These are the different names with which we call them in vernacular names. Yes, here comes the global or Indian scenario of millet. When the era of Green Revolution started in 1961 to 1965, by introducing the high-yielding and dwarf stature varieties of rice and wheat, and also starting the high-intensified farming with the introduction of maize, cotton, and soybean, which are called as the cash crops in 1961 to 65 and onwards. There, the area under millets globally and also in nationally has decreased drastically. We can see in this graph where the green line of sorghum has reduced from 1961 up to 2014. Up to 2014, and the others like cotton, maize, and soybean, the area has increased. We can see in the graphs provided below in this particular graph. And it is on our fingertip that we can count the number of states where the millets are in cultivation. It is not same with others because major cereals, rice and wheat, they are cultivated entirely in India, occupying more than 45 million hectares or 39 million hectares respectively. किसान साथियों के लिए बताना चाहता हूं कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था उस समय एरिया अच्छा ही था मिलेट्स में या पोषक अनाज में या मोटे अनाज में अच्छा एरिया था, बट बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस मोनोकल्चर हम ओनली गेहूं और राइस ज्यादातर से कल्टीवेशन कर रहे हैं. इसके वजह से अभी 2014 देख लिया तो मिलेट्स का एरिया ग्लोबली बहुत ज्यादा, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है और नेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे तो बहुत ज्यादा नेग्लिजेंस कर दिया है. क्यों नेग्लिजेंस कर दिया? इसके लिए रीजन है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का ज्यादातर फूड प्रोड्यूस करना था इंडिया के लिए, वो बहुत ज्यादा नेसेसिटी था. इसलिए उस समय राइस एंड व्हीट वैराइटीज इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, तो उसको कल्टीवेट करने के लिए दूसरा क्रॉप्स को नेग्लेक्ट कर दिए. उस समय हमारा एम ओनली ये था कि ओनली फूड सिक्योरिटी इंडिया सिक्योरिटी, और अब ये हो गया कि नॉट ओनली फूड सिक्योरिटी, हम तो फूड प्रोडक्शन में अभी थोड़ा बहुत क्रॉप्स में ज्यादा मींस ऑलरेडी हमारा टारगेट क्या था वो पहुंच गया है,
बट इसके साथ साथ हम बहुत बड़ा एक बिगेस्ट मिस्टेक कर दिए थे जब ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा था। वो था ये न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स है, पोषक से भरा हुआ ये मोटे अनाज है, हम इसको छोड़ दिए थे, कल्टीवेशन करना भी छोड़ दिए थे, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा स्टेट्स में बंद भी कर दिए थे। और ओनली हाई यील्डिंग है, कैश ज्यादा मींस कॉस्ट ज्यादा है बोल के दूसरा क्रॉप भी कल्टीवेट अभी भी कर रहा है, पहले बहुत साल से आ रहे हैं। इसकी वजह से अभी क्या हो गया, बहुत लोगों के बॉडी में या बिकॉज ऑफ फूड डाइट व्हाट वी आर, हम ज्यादा क्या खा रहे हैं, उसके वजह से हमको बहुत डिसीज आने लगे हैं और उसका रेट भी इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि वो कंट्रोल करने में भी मुश्किल हो रहा है। गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा स्कीम्स भी लेके आ रहा है कि ओनली डिसीजेस को कंट्रोल करने के चक्कर में। तो हम उस समय न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का थोड़ा भी सोचा ही नहीं, ओनली हम फूड सिक्योरिटी का ही बहुत ज्यादा सोच लिए थे। ऑलमोस्ट ऑल क्रॉस में अभी हो चुका है, बट स्टिल इन सम पल्सेस में होना है और दूसरा क्रॉस में अभी जरूरत है। बट उसके साथ साथ उस समय ही ग्रीन रेवोल्यूशन जब हो रहा था, उस समय ही हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के बारे में भी थोड़ा सोच लिया होता तो ये मोटे अनाज का या पोषक अनाज का क्या वो पहले से ही हमारे साथ रहता था और उतना ज्यादा हमको डिसीजेस भी ज्यादा बढ़ते नहीं थे और ये डेथ का एज क्या कम होते रहना वो भी नहीं रहता था। हम सब लोग तंदुरुस्त से जीते थे या अच्छे हमारा हेल्थ भी रहता था। बट ओनली खाने का चीज या फूड आइटम्स क्या है उसके वजह से ही हमको बहुत ज्यादा डिसीजेस आ रही है की बात है। और हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना डिस्ट्रिक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट का कितना डिस्ट्रिक्ट में ये सभी मोटे अनाज का कल्टीवेशन हो रहा है। ये एक्चुअली अदर या मेज या राइस या हम गेहूं ले लिया तो वो कितना डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा हम एरिया बता देंगे, 9.5 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, 25 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, वैसा बता देंगे। बट ये मोटे अनाज का बट हम इतना बता सकते हैं कि प्रोसो मिलेट किधर का हम बोलेंगे प्रोसो मिलेट ज्यादा एरिया महाराष्ट्र स्टेट में है, एक ही स्टेट। कोडो मिलेट किधर है? कोडो मिलेट है मध्य प्रदेश में ज्यादा एरिया है। फिंगर मिलेट किधर है? फिंगर मिलेट है कर्नाटका में और उत्तराखंड में थोड़ा एरिया है। ऐसा हम थोड़ा थोड़ा एरिया ही ये सब मिलेट्स का बच गया है अभी। तो इसलिए अभी ये बहुत प्राइम इम्पोर्टेंस है कि टू अटेन द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, हमारा हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हम क्या खा रहे हैं उसमें ज्यादा डाइवर्सिफाई करने के लिए अभी जरूरत है। तो मिलेट्स का एरिया तो 50% ऑलरेडी घट गया है, बट बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसफर इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज इन स्टेट्स, तो मिलेट्स का प्रोडक्शन बढ़ गया है 32% एंड मिलेट्स का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गया है 159%। दिस इज compensating the declining area of these millets. Productivity increase has significantly compensated the area decline till late, but these मोटे अनाज इसको एक्सेलरेशन का या सपोर्ट का बहुत जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हम तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, हम हेल्दी रहना चाहते हैं, हम हेल्दी खाना खाना चाहते हैं, हमारा बच्चे या आने वाले पीढ़ी को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे के जाना चाहते हैं, तब हमारा ये मिलेट्स बहुत काम आ जाएंगे। इसके लिए एक्सेलरेशन और सपोर्ट का बहुत जरूरत है। इसलिए सभी किसान साथियों में मेरे निवेदन है कि आप चाहे तो इसका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपके लिए सेपरेट एक सेशन भी रखेंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कल्टीवेट दीज मिलेट्स, वी विल प्रोवाइड द वन मोर सेशन ऑन प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स ऑफ these millets, which we can take at your area and for consumption or even for marketing also, because now they are gaining a lot of importance. Now these millets मोटे अनाज को अमेरिका, इंग्लैंड और दूसरा कंट्री में सुपर फूड्स बोल के सेल हो रहा है बहुत हाई कॉस्ट में, बट इधर इंडिया में किधर किधर अवेलेबल है, उधर भी खाना नहीं खाना चाहते लोग। ये हमारा इंडिया का परिस्थिति है, बट उन लोगों को ध्यान देना, टेक्नोलॉजी बढ़ाना हमारा काम है, तो हम वो कर रहे हैं। तो अभी इसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ ये मिलेट्स कल्टीवेशन हो रहा है बोल के। तो अभी 3 मिलेट्स ऐसे है, मोटे अनाज ऐसे है कि वो इंडिया में ही पहले से ही कल्टीवेशन करते आ रहे हैं और अदर मिलेट्स को हम दूसरा कंट्री से अभी कल्टीवेशन भी कर रहे हैं। Now importance of millets has increased because of their significant nutritional richness, not only nutritional, specifically in nutrition, minerals,
and phenolic compounds or flavonoids, what we call as vitamins also and minerals also. That's why the area is increasing. But still, we can tell that particular millet is having more area in particular state. That we don't want. We want that in India, most of the states of India should cultivate all these millets. There should not be any monoculture of major cereals. I am not denying the major cultivation of major cereals. They are required for our food security, our food sustainability. But along with that, we need nutritional security also. So we have to diversify our fields also with different crops, our plate also with different foods, not only with rice and wheat based chapatis and rice. So I will tell about different facts, whatever happening in India now. Diabetes in India, which is called as the epicenter, that means it is the origin of diabetes in whole world. And it has become the epidemic, epicenter of global diabetes epidemic. Now diabetes is epidemic. That means सारे इंडिया में हर स्टेट में डायबिटीज बहुत ज्यादा फैल रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है, केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है. The Diabetic Research Center of Madras or Chennai, India has reported that 69.2 million people they have diabetes in India. It is not a small number, 69.2 million people. It is set to increase to 123.5 million by 2040. So we have to think about this. We are having solution, but we are not at all taking it. We are not at all taking it as a treatment. Some other facts are 46 million women, they have osteoporosis. Osteoporosis का मतलब है कि हमारा हड्डियां बहुत वीक हो जाते हैं या फ्रेजाइल हो जाते हैं. वीक होने से या कहीं थोड़ा ही फोर्स लगा के काम करने लगे तो हड्डियां टूटने का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है. वो है ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन. हम बताते हैं एक डिसीज है व्हिच कॉजेस. इसकी ये रीजन है कि हम खाना क्या खा रहे हैं उसमें कैल्शियम का कंटेंट बहुत कम है. तो ये ज्यादातर वुमेन्स में ज्यादा होता है. तो इंडिया में 46 million women are there which are having this particular disease. And 44% of Indian children, हमारे छोटे बच्चे क्या पैदा हो रहे हैं या 5 साल के नीचे है वो लोग अंडरवेट है या माल नरिश्ड है. 44% of the Indian children's they are malnourished. They are undernourished. 17.9 million people they are died due to cardiovascular diseases. That represents 31% of the global deaths. 31% of the global deaths which are occurring they are in India, which are due to heart attacks or heart-related problems. And more than 20 million low birth weight infants. इसका मतलब छोटे बच्चे पैदा होते हैं ना उसका बहुत वेट कम है. उसमें 7.8 million cases are from India. That means nearly 39% are born with very low birth weight. That is also called as a malnutrition. इतना ज्यादा बच्चे में भी प्रॉब्लम हो रहा है. Our 72% of the infants, that means छोटे बच्चे, और 52% of the married women or pregnant women or lactating women, they are having anemia. अनीमिया भी एक ऐसा डिसीज है वो आयरन का डेफिशिएंसी के थ्रू आता है. आप क्या खा रहे हैं उसमें आयरन का कंटेंट कमी है तब आपको एनीमिया होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है. इन्फेंट्स को या छोटे बच्चे को और मैरिड वुमेन, स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए कैल्शियम का आयरन का बहुत जरूरत रहता है. बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उसका रिक्वायरमेंट रहता है. बट वो ज्यादा ओनली उन लोगों को राइस और व्हीट खिलाते हैं तो उसमें ज्यादा आयरन का या कैल्शियम का कंटेंट कितना है उतना उन लोगों को बॉडी का रिक्वायरमेंट कितना है वो सफिशिएंट नहीं हो सकता. तो इसलिए हम डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरत है. तो which are the different diseases which are linked to nutrients or food habits or work culture. There are many diseases I have mentioned like diabetes, which comes due to increased sugar level in your blood, anemia due to iron deficiency, pellagra due to vitamin amino acid deficiency, tyrosine and tryptophan and lysine deficiency, beriberi because of vitamin A deficiency, scurvy because of vitamin C deficiency,
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, टॉक्सिकेशन होता है, हाइपरग्लाइसीमिया दैट इज डायबिटीज, हाइपरटेंशन होता है ज्यादा काम या स्ट्रेस की वजह से, ओबेसिटी होता है क्योंकि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन अक्यूमुलेशन होने की वजह से कुछ एंजाइम्स अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं किए तो भी ओबेसिटी होता है, और सीलियाक डिसीज होता है ग्लूटेन रिच फूड खाने की वजह से, कैंसर भी होता है बिकॉज हमारा कोलोन का बैक्टीरिया फंगस क्या है या गट माइक्रोफ्लोरा क्या है वो अच्छे नहीं है, क्या बैक्टीरिया और फंगस का ज्यादा कंसंट्रेशन इन कोलन में इंटेस्टाइन में होने की वजह से कैंसर भी हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस में बता दिया कि हड्डियों का बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाता है क्योंकि कैल्शियम कंटेंट कम होते जाए, एज होते से भी कैल्शियम कम होता है, और प्रेग्नेंट वुमेन में भी कम होता है क्योंकि और कैटरैक्टोजेनेसिस एक आई लेंस का प्रॉब्लम होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ सॉर्बिटॉल या आई लेंस क्या रहता है उसका कमजोर होते जाएगा, आपका एज जैसा होता है वैसा। तो ये सब डिसीजेस हमको मालूम है, ये किसके लिए होता है ये भी मालूम है, और हमको इतना भी पता है कि ये क्या खाने से या हम क्या करने से ये कम होता है करके, बट कौन करेगा ये मेन क्वेश्चन। तो हमको डाइटरी का रिक्वायरमेंट क्या है, डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या है बॉडी को, मेन एंड वुमेन्स को देखिए तो ऑलमोस्ट सेम है, बट कैल्शियम एंड आयरन कंटेंट का जरूरत प्रेग्नेंट वुमेन्स में या लैक्टेटिंग वुमेन्स में ऑलमोस्ट डबल है। उस समय उन लोगों को बहुत ज्यादा कैल्शियम का और इनका रिक्वायरमेंट होता है बिकॉज दे हैव टू सप्लाई दैट आयरन एंड कैल्शियम टू देयर बेबीज व्हिच आर ग्रोइंग इनसाइड देयर womb or developing babies also, the lactating babies supply these minerals to their babies. That's why they need more amount of calcium and iron along with protein, fat and calories. And teenage children, they also need more amount of iron, that is 26 to 30 milligrams per day. And also the growing children, छोटे बच्चे रहते हैं उसमें ग्रोथ होता रहता है, उसको को भी कैल्शियम का बहुत जरूरत होता है कंपेयर टू मेन एंड वुमेन अडल्ट स्टेज, अबाउट 800 मिलीग्राम्स का जरूरत रहता है पर डे। तो इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट कहाँ से लेंगे, हम ओनली मेजर सीरियल्स व्हीट एंड राइस खाते रहे तो हमको कहाँ मिलेगा, उसमें उतना ज्यादा कैल्शियम है, आयरन है या दूसरा कुछ मिनरल्स है, दूसरा कुछ विटामिन है, ये हम सब जानकारी हमारे पास नहीं है, तो हम क्या खा रहे हैं उसमें क्या कंटेंट है ये तो हम ले लेना और खा लेना अच्छा है। ये तो एटलीस्ट ऑलरेडी अवेलेबल मिलेट्स है, उसके खाने की वजह से क्या होता है अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा, अवेलेबल है तो वो खाना भी शुरू करना बहुत अच्छा है। तो व्हाई वी आर एड्रेसिंग मिलेट्स टुडे, आर दीज मिलेट्स आर द आंसर टू दीज प्रॉब्लम्स व्हाटएवर आई हैव मेंशन्ड इन द अर्लियर स्लाइड्स, आर वी रियली थिंक दैट दीज मिलेट्स विल एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स? Yes, to these the answer is really and ready answer is yes, because these millets are nutrient rich. This slide and this table is really very important, very important. One should know this because this table is generated over the years, not only in 1 year or not two, one year or 2 year, with different labs and different researchers. National Institute of Nutrition has developed this and updated it in 2017. And also Smita D and Nirmala G updated this in 2018. So this table tells that these millets along with sorghum and pearl millet which are rich in which particular component or which nutritional composition. We can see pearl millet here. This pearl millet is rich in protein as well, which is almost equivalent to wheat protein, and it is rich in fat content, dietary fiber content, iron content, zinc content, and different vitamins like flavins, niacin, and folic acids. And if we take phosphate millet, this is rich in protein content and different vitamins. If we take barnyard millet, this is rich in dietary fiber content, iron content, and other vitamins. So individual separate millets are rich in separate nutrient compositions, and they are having common high phenolic contents also, and antioxidant properties of these phenols plays major role in health benefits of human beings. तो इसमें मैं किसान साथियों को ये बताना चाहूंगा कि इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा ये मोटे अनाज किस में रिच है, रिचनेस है, किस में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है, कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा कौन सा मिलेट में है करके इस टेबल में बता गया है कि मैं बता गया है। और मैं ये टेबल या ये पीपीटी ऑलरेडी आपके कोलीग्स को या आपके कोऑर्डिनेटर को शेयर कर दिया हूं, अब चाहे तो बाद में भी इसका जानकारी आपके साइंटिफिक या टीचिंग फैटर्निटी से ले सकते हैं। So coming to proteins which are present in millets, there are 3 different proteins are available in millets like in other cereals.
But what makes these millets are special? Here comes, this is the table which I shown below. That is the table which is showing the essential amino acid content in the millet. Here we can see arginine, histidine, there are 12. Initially, there were only 9 amino acids which were considered as essential, which are not synthesized in our body. But they are required for our body, and we have to get these essential amino acids from external sources only, or from food sources only. And they are highly essential for our body functioning. Most of the functions of the body are dependent on these essential amino acids. That's why they got the name as essential amino acids. And if we see this table, here we can see finger millet, which is rich in arginine, lysine content, tryptophan, phenylalanine. Most of the essential amino acids and most of the millets, they are rich. All the highlighted figures, the data they are showing, they are rich in these essential amino acids. So ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारा बॉडी के लिए कि ये एसेंशियल अमाइनो एसिड वो हमारे खाने में हमारा बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है, और हम ये सब एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को हमारे फूड के माध्यम से ही अंदर लेना है. तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी का फंक्शनिंग में. तो ये कौन सा फूड में ज्यादा है ऐसा पूछते हैं, मिलेट्स में बहुत, सभी मिलेट्स में सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का कंटेंट बहुत ज्यादा है व्हेन कंपेयर्ड टू मेजर सीरियल्स, maize and other pulses. Pulses are rich in proteins with balanced amino acids. They are also having some essential amino acids. These millets are equivalent to those pulses also compared to essential amino acid content. And coming to fatty acid composition, कितना fats है, कितना composition हमारे इसमें हमारे millets में, तो ये रेंज होता है कि 1% to 5%. हाईएस्ट होता है फिंगर मिलेट में और कोडो मिलेट में, बट हाईएस्ट होता है पर्ल मिलेट में, फॉक्सटेल मिलेट में और प्रोसो मिलेट में. उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस फैटी एसिड्स का कंपोजिशन में क्या क्या है. उसके फैटी एसिड बोले तो फैटी एसिड का डिफरेंट फ्रैक्शंस होता है, तो डिफरेंट टाइप्स होता है. हमको कौन सा ज्यादा जरूरत है वो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. लास्ट 3 कॉलम में आप देख सकते हैं ओलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड और लिनोलेनिक एसिड. दीज आर कॉल्ड एज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. These are very important for our body functioning, and also these are also essential. They are not synthesized in our body. They have to be we have to get these things from our food only. तो किसान साथियों, ये है कि इसमें लास्ट में 3 लिखा हुआ है कि ओलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड. ये मिलेट्स का फैट्स में बहुत ज्यादा रहता है और ये ज्यादा होना भी चाहिए. और इसका हमारे बॉडी में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में बताया था ना लास्ट स्लाइड में, वैसा ही ये तीनों का भी हमारा बॉडी में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है बॉडी में, बॉडी का हेल्थ के लिए. तो ये इसका परसेंट मिलेट्स में ज्यादा है. मिलेट्स में coming to one more very important slide, it's mineral composition of millets. These millets are known for this mineral. Apart from their proteins or fats or carbohydrates, or different types of proteins or different fractions of proteins or fatty acids. But along with that, mineral and vitamins also, they are rich. Millets are very rich in minerals. Specifically, if you take through this table also, will come to know magnesium, sodium, potassium, copper, manganese, molybdenum, zinc, chromium, selenium, chlorine. What you take, almost all minerals which are required for our body day-to-day life, day-to-day functionalities, they are abundant in these millets. They are not simply, it is not a simple data. It has been developed over the years by different research groups, and they have analyzed whole grains and also polished grains of millets, and they came to conclusion that these millets are really rich sources of minerals. And we can see here, foxtail millet, it is rich in potassium and copper and selenium. Proso millet is rich in magnesium, copper and selenium. Finger millet is rich in many other minerals. Highlighted ones are richer sources of, or highlighted black ones, you can see that these are rich sources. They are highest in these millets. One more important table, that is vitamin profile of millets. Yeah, these millets are really rich in vitamins also, along with minerals, along with proteins, along with different polyunsaturated fatty acids. You can see the richness of these millets in this particular table. Foxtail millet is rich in thiamine, niacin,
And proso millet is rich in thiamine, niacin, and riboflavin. These are different kinds of vitamins which we require daily. And these millets are abundant sources of these vitamins. Specifically vitamin E and B complex of vitamins, except vitamin B12, which we got from sunlight exposure through exercises. Or through abundant usage of calcium, through which absorption of vitamin B12 will be increased. So apart from our except vitamin B12, we get most of the vitamins which are required for our body. So where these carbohydrates or proteins or lipids are distributed in our small millet grains. Yeah, here we can see endosperm, which contains 94% of the starch, and pericarp part of the grain, the small grain, contains fibers, lipids, phenolic compounds, which are very important for health benefits. And germ portion of the grain contains proteins and lipids. And endosperm contains 61% of the protein, but the germ, which is having 31% of the protein, is very balanced protein with almost all essential amino acids in that. This germ portion. And bran also contains 10% of the protein. Coming to lipids, lipids is highest in the germ portion of the small grains. And endosperm contains 6% of it, and bran contains 5%. What is bran? Bran is a combination of, or it's mixture of two parts, electron layer and pericarp layer. If we remove the bran, we must remove the nutrients, because bran contains 10% of the protein and 5% of the lipids. And pericarp contains major fiber, lipids, and phenolics. So we have to take care while polishing the grains. Simple dehulling, dehulling is most of the cases in most of the millets, dehulling is enough instead of going for 1 or 2 more round of polishing. So if we have idea of this one, then we will involve these technologies or whatever knowledge we are having in polishing or dehulling. So already I explained which millet is rich in which particular nutrient in above tables, nutrient tables, and nutrient composition of different carbohydrates, proteins, and different things. Here I will take one millet at a time. Sorghum. It is rich source of vitamin A and also folic acid. It is rich in polyunsaturated fatty acids, magnesium, and manganese. It is rich in resistant starch, soluble and insoluble dietary fibers, and also antioxidants. Sorghum is known for these 4 different traits, and it is having richness for all these things. Pearl millet, which is called as bajra. बाजरा में ये ज्यादा है कि उस पर्टिकुलर स्मॉल ग्रेन में एनर्जी भी ज्यादा है और फास्फोरस कंटेंट भी ज्यादा है और ऑयल का कंटेंट ज्यादा है, उसमें उस ऑयल में लिनोलेनिक एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड कंटेंट या पोर्शन ज्यादा है, which is very much required for our body or health. And these are rich sources of vitamin A and also folic acid. They contain highest amount of arginine, histidine, and tryptophan. This histidine is the essential amino acid which is very much required for growing children or small infants. Histidine essential amino acid is an important one for children. This is the only grain which retains its alkalinity after cooking. This is a very important character of pearl millet because most of the major cereals, including maize or even pulses, they causes acidity in your colon, the intestine. They increases little bit amount of acidity because of their digestion. But, or even while cooking only, their property changes. But pearl millet retains that property of alkalinity after cooking or after consumption. That's very important, which balances or neutralizes or maintains the pH in our colon. These are also rich in resistant starch, soluble and insoluble dietary fibers and amino acids. फिंगर मिलेट में आते हैं तो फिंगर मिलेट को सबको पता है कि ये सबसे ज्यादा कैल्शियम किस में है, पूछ लिया तो सब लोग बोलेंगे कि फिंगर मिलेट में ज्यादा है या रागी में ज्यादा है, मंडवा बोलते हैं या रागी बोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा है, इसका सबसे ज्यादा है, इसका मुद्दे बोलते हैं। तो मुद्दे को बनाने के बाद लोग ऐसा खाते हैं कि इसमें कैल्शियम टैबलेट है जैसा, तो कैल्शियम टैबलेट का जैसे ये फिंगर मिलेट का फ्लोर का यूज करते हैं तो उतना ज्यादा कैल्शियम है। मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि कैल्शियम रिक्वायरमेंट किस लोगों को ज्यादा होता है, पर्टिकुलर डे के लिए कैल्शियम रिक्वायरमेंट कितना है, 600 मिलीग्राम है, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए 1200 मिलीग्राम है। तो हम क्या राइस और वीट खाने से हमको 600 या 1200 मिलीग्राम तक मिल सकता है कैल्शियम, वो एक बार सोचने की बात है। तो फिंगर मिलेट ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है तो इसका हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, करके हम इसका यूज भी कर सकते हैं। हमारे वुमेन्स को, हमारे बच्चे को अच्छी तरह से रिक्वायरमेंट क्या है बॉडी का या ग्रोथ का रिक्वायरमेंट क्या है वो हम दे सकते हैं, या हमारे खुद का भी
बोन का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कैल्शियम का जरूरत होता है। तो मेंस भी बहुत ज्यादा फील्ड में या खेतों में बहुत काम करते रहते हैं, तो उन लोगों का भी बोन स्ट्रेंथ होना या मसल स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरत है। और कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल मेन, वुमेन, ऑल एज, दिट इज रिक्वायर्ड। तो सबके लिए कैल्शियम का जरूरत होता है। तो finger millet, a very good source of essential amino acids. Already I told in the slide, in the table also, and these are also sources of having minerals and polyphenolics with higher antioxidant activity, and they are rich in resistant starch, insoluble dietary fibers and antioxidant properties. Coming to foxtail millet, हम इसको कंगनी कहते हैं। ये कंगनी में ज्यादा प्रोटीन होता है, बहुत ज्यादा बैलेंस्ड प्रोटीन होता है ये foxtail millet में। तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फिनाइल अलानिन और ल्यूसिन रहता है, व्हिच आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसमें हाईएस्ट होता है थायमिन एंड विटामिन ई, दीस आर द टू विटामिन्स व्हिच आर हाईएस्ट इन फॉक्सटेल मिलेट। और इट इज हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्टीरिक एसिड एंड लिनोलेइक फैटी एसिड्स, दीस आर द फैट्स और द लिपिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन फॉक्सटेल मिलेट। तो प्रोसो मिलेट, ये चना बोलते हैं, वो किसके लिए जाना जाता है? तो इसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है और इसमें भी बहुत अच्छे तरह से एसेंशियल अमीनो एसिड्स ज्यादा रहता है। तो ल्यूसिन रहता है, आइसोल्यूसिन रहता है, म्यूसिन रहता है। ये विटामिन के बाद आ गए तो राइबोफ्लाविन विटामिन रहता है, नियासिन रहता है। तो इसमें भी हाई एंटीऑक्सीडेंट का या लिसिन का ज्यादा है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छा है। तो लिटिल मिलेट हम कहते हैं सामे या कुटकी बोलते हैं। इसमें इट इज आल्सो रिच सोर्स ऑफ फैट एंड फोलिक एसिड। इट इज आल्सो रिच इन एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड रिच इन मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक एंड क्रोमियम। कोडो मिलेट के बाद आ गए तो कोडो मिलेट में विटामिन बी का या विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज्यादा होता है, अलॉन्ग विद नियासिन, पायरिडॉक्सिन एंड फोलिक एसिड्स। और इसमें ज्यादा होता है मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर। मैं किसान साथियों को और एक बात बताना चाहता हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि फोलिक एसिड ज्यादा है, विटामिन ज्यादा है, कॉपर ज्यादा है, मैग्नीशियम ज्यादा है, मैंगनीज ज्यादा है। ये ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, बल्कि मैं आपको आगे के स्लाइड में बता दूंगा, बट इतना अभी जान लीजिए कि कौन सा मिलेट में क्या ज्यादा है। तो कोडो मिलेट में इट इज आल्सो रिच सोर्स ऑफ फैट एंड डाइटरी फाइबर कंटेंट, एंड इट इज रिच इन फोलिक एसिड, इट इज रिच सोर्स ऑफ पॉलीफिनॉल्स आल्सो। तो बार्नयार्ड मिलेट या ऊदुल कहते हैं और इसको सावा कहते हैं। तो सावा में क्या ज्यादा होता है बोले तो डाइटरी फाइबर कंटेंट या नॉन स्टार्ची पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, व्हिच इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं डाइटरी फाइबर को, वो रहता है ज्यादातर इन बार्नयार्ड मिलेट में या सावा में। This is also rich in niacin, folic acid and riboflavin vitamins, and also rich in different essential amino acids, rich in iron and zinc. After pearl millet, this is called as having highest iron and zinc content small millet, and this is also rich in polyunsaturated fatty acids along with other millets. So हम जान लिए कि कौन सा मिलेट में कौन सा न्यूट्रिएंट है बोल के। मैं समझ लेता हूँ कि सबको ऑलरेडी समझ में आ गया कि फॉस्फेट मिलेट में क्या है, प्रोसो मिलेट में क्या है। मैं बोल रहा हूँ विटामिन ज्यादा है या मिनरल्स ज्यादा है या फोलिक एसिड ज्यादा है या फैटी एसिड्स कौन सा अच्छा होना चाहिए वो ज्यादा है। तो मैं सोचता हूँ कि आप थोड़ा तो समझ लिए होंगे। तो हम अभी जानते हैं कि क्या है न्यूट्रासेटिकल फूड्स क्या होते हैं। मैं आज प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ न्यूट्रासेटिकल फूड्स के ऊपर या फंक्शनल फूड्स के ऊपर। बट न्यूट्रासेटिकल क्यों कहते हैं, न्यूट्रासेटिकल फूड्स मिलेट्स को क्यों कहते हैं? तो इसका मतलब यह है कि न्यूट्रासेटिकल इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस दैट इज अ फूड or a part of food or any bioactive compound of the food that provides medical or health benefits, including the prevention of the disease or treatment of the disease. ये फूड को हम डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं या डिसीज आने के बाद उसको ट्रीटमेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। फूड में वो पर्टिकुलर फूड में वो ये दोनों प्रॉपर्टी है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मिलेट्स वो फूड में है, तो उसको हम न्यूट्रासेटिकल फूड बोलते हैं। तो जान लीजिए फूड को हम डिसीज प्रिवेंट करने के लिए या डिसीज का ट्रीटमेंट करने के लिए, अभी डिसीज आया नहीं बट डिसीज आने का चांस है, या नहीं मैं बहुत ज्यादा राइस खा रहा हूँ मुझे बाद में शुगर आने का चांस है, मैं क्या खाऊं, वैसा आप नहीं, वो आने का क्या चीज है उसको प्रिवेंट करना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आप ऐसा चाहते हो तो ऐसा प्रिवेंट करना चाहते हो तो आप मिलेट्स खाना चाहिए। तो इसलिए उसको न्यूट्रासेटिकल फूड बोलते हैं क्योंकि millets they reduces the occurrence or the risk of occurrence of different diseases, specifically diabetes and also some cancer, different types of cancers। वो हो गया, अब डायबिटीज आ गया है, अब क्या करें? तो प्रिवेंशन तो नहीं हो पाया, हम उसको रोक नहीं पाए, बट हमको ऑलरेडी डायबिटीज आ गया और बहुत जो ज्यादा है हमारा शुगर कंटेंट ब्लड में
या हमको ऑलरेडी थोड़ा कैंसर का इधर उधर शुरू हो रहा है, या प्रोलिफरेशन, सेल प्रोलिफरेशन बोलते हैं, सेल का मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कोलॉन, स्पेसिफिकली कोलॉन इंटेस्टाइन में। वो किसके लिए बढ़ जाता है? उसमें बैक्टीरिया फंगस का इम्प्रॉपर फंक्शनिंग होता है, या बैक्टीरिया फंगस का, या व्हिच आर नॉट बेनिफिशियल टू आवर बॉडी और इंटेस्टाइन, दोज विल बी इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ द फूड इन योर इंटेस्टाइन। वैसा होने की वजह से आपके इंटेस्टाइन में ज्यादा बैड बैक्टीरियाज और which are not health beneficial, those bacteria fungus का ग्रोथ होने की वजह से सेल का प्रोलिफरेशन ज्यादा होने का चांस रहता है। तो ये सब अवॉइड करना है। तो हमको ऐसा नहीं है तो अच्छा वाला बैक्टीरिया फंगस को उसका इंप्रूवमेंट कराना है गट इकोसिस्टम में, या हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं उसको अवॉइड करके अच्छी तरह से डाइजेशन का इंप्रूवमेंट कराना है। ये सब कराने के लिए हमको अच्छा वाला फूड खाना है विथ बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट कंटेंट, because nutrients and specifically minerals and vitamins, they play a role in enzymatic activities, different enzymatic activities involved in digestion. Some they will inhibit, some they will increase the efficiency of enzymes. So they are having prevention property also and treatment property also. That's why they are called as nutraceutical foods. So for example, consumption of millets reduces the risk of cardiovascular diseases. तो आपको हार्ट रिलेटेड डिसीजेस कुछ नहीं आना चाहते हैं, या बहुत देर तक, बहुत ज्यादा एज होने तक नहीं, उसका रिस्क नहीं लेना है, ऐसा सोचते हैं, तो आप मिलेट्स खाने का शुरू कर लीजिए। नहीं, मुझे ऑलरेडी डायबिटीज आ चुका है, तब तो आपका शुगर लेवल आप कम करना चाहते हैं तो मिलेट्स खाने के लिए शुरू, इससे आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा। आपको के लिए ग्लूकोज, एनर्जी रिलीज टू ब्लड वेसल्स और ब्लड वेन सब कितना चाहिए उतना ही आपको स्लो से रिलीज होता रहेगा, उतना यूज होता रहेगा। एकदम राइस या अदर दूसरा मेजर सीरियल्स खाने की वजह से ग्लूकोज का बहुत जल्दी या फास्ट रेट में ग्लूकोज में रिलीज होने की वजह से फुल यूटिलाइजेशन नहीं होता। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज नहीं होने की वजह से उसका अक्यूमुलेशन इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो गया तो आपको डायबिटीज का रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए स्लो रिलीज ऑफ ग्लूकोज रहे या स्लो डाइजेशन होते रहे आपका स्टमक में, तो आपको स्लो रिलीज ऑफ ग्लूकोज, स्लो रिलीज ऑफ एनर्जी टू blood vessels, that will lead to reducing the risk of different cardiovascular diseases and also reducing the sugar content in your body. Then why millets are called as functional foods? Why it is treated as a functional food? The functional food is any fresh or processed food or any bioactive component present in the millets or any crop which is claimed to have a health promoting or disease preventing property beyond the basic function of supplying nutrients. Okay. तो functional foods इसलिए कहते हैं कि ये millets nutrients को सप्लाई तो कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी उसमें nutrients बहुत ज्यादा है, minerals भी है, vitamins भी है, तो उसका सप्लाई तो हो जाएगा बॉडी के लिए या ब्लड के लिए और हेल्थ डिफरेंट हेल्थ फंक्शंस के लिए। उसके साथ साथ these millets they act as health promoting because of their different other properties, anti-obesogenic और एंटी हाइपरटेंशन या एंटी हाइपरग्लाइसीमिया या दैट इज डायबिटीज। दूसरा प्रॉपर्टीज भी है उसके साथ साथ। कितना न्यूट्रिएंट चाहिए उतना सप्लाई कर लिया, हो गया यार मेरा, ऐसा नहीं है। दे विल सप्लाई अदर हेल्थ प्रमोटिंग कंपाउंड्स आल्सो टू योर बॉडी। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल फूड्स। तो जनरल कैटेगरी ऑफ फंक्शनल फूड्स इंक्लूड्स होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स आप कंज्यूम कर सकते हैं या प्रोसेस्ड भी हो सकता है या फोर्टिफाइड। हाँ, हियर कम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब लोगों को पता है कि ऑलरेडी बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज है, विटामिन एनरिच्ड प्रोडक्ट्स है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि राइस इज नॉट अ फंक्शनल फूड। राइस में कुछ बायो फोर्टिफाइड, जिंक बायो फोर्टिफाइड है, आयरन बायो फोर्टिफाइड है, तो इट इज सप्लीमेंटिंग सम अदर compounds also along with the nutrients. It is providing somewhat extra with the nutrients. Then those foods are called as functional foods also. For example, vitamin enriched products, you can call them as a functional foods. Millets are considered as functional foods because they are powerhouse of minerals and specifically vitamins also. तो what are the nutraceutical properties? किस के लिए हम इसको nutraceutical बोलते हैं? Pharmaceutical बोल दिया तो टैबलेट्स है या कुछ टॉनिक है, इसके लिए हम फार्मास्यूटिकल बोलते हैं। वो केमिकल सिंथेसाइज्ड होता है, some are through plants also, plants extracted also. But nutraceutical, प्लांट बेस्ड में, प्लांट के थ्रू आया हुआ या प्लांट ग्रेन्स या फूड प्रोडक्ट्स में आया हुआ
न्यूट्रासिटिकल प्रॉपर्टीज कौन सा है, या मेडिसिन, प्लांट बेस्ड मेडिसिन क्यों कहते हैं। तो ये मिलेट्स है ग्लूटेन फ्री। ये अब सबको ये भी जानकारी होगा कि व्हीट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्लूटेन रहता है। ग्लूटेन के वजह से होने की वजह से ही हम उसको ब्रेड बना सकते हैं या बिस्किट बना सकते हैं व्हीट से या गेहूं से। बट ये मिलेट्स में ये ग्लूटेन नहीं है। तो ये ग्लूटेन कंटेंट नहीं होने से क्या यूज है, क्या फायदा है हेल्थ के लिए। तो ऐसा पूछे तो इट इज आइडियल फॉर सीलियाक पेशेंट। सीलियाक डिसीज क्या होता है या सीलियाक पेशेंट्स कौन होता है। तो इसमें है कि आप कुछ गेहूं का कुछ चपाती खा लिए, बट वो चपाती या गेहूं का तो कुछ उपमा कुछ खा लिया, बट उस खाने की वजह से आपका डाइजेशन नहीं हो रहा है आपका इंटेस्टाइन में। क्यों नहीं हो रहा, ऐसा बहुत बार हो रहा है, या कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन प्रॉब्लम होकर आप बहुत ज्यादा हेल्थ अपसेट हो रहा है। तो ये कंटिन्यूअस ओवर द इयर्स, बहुत सालों से हम व्हीट और राइस खाते आ रहे हैं, ये कंटिन्यूअस खाने की वजह से या ये सीलियाक डिसीज आ जाएगा। ये एक दिन में, 2 दिन में, 1 मंथ में, 1 साल में नहीं आता। तो ये बहुत कंटिन्यूअसली खाने की वजह से ये ग्लूटेन इंटॉलरेंस बोलते हैं या सीलियाक डिसीज बोलते हैं। वो ग्लूटेन खाने की वजह से अंदर कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन टाइप हो जाएगा। तो वो क्यों होता है बोल के मैं आपको आगे का एक स्लाइड है उसमें भी बता दूंगा फुल इन डिटेल में। तो अभी इतना जानकारी ले लीजिए कि ये these millets are gluten free and these are ideal for the patients which are having celiac disease. So prebiotic foods, these millet based foods can be used as a prebiotic foods to increase the or enhance the probiotic activity of microflora which are present in your gut ecosystem or inner ecosystem. मैं पहले भी बता दिया था कि आपका इकोसिस्टम, गट इकोसिस्टम में या इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया फंगस होते हैं, हेल्थ बेनिफिशियल वाला भी होता है, उसका क्वांटिटी, उसका नंबर बढ़ाना है। तो उसके लिए प्रीबायोटिक फूड्स हम मिलेट्स के थ्रू खाते हैं। तो मिलेट्स में रहता है कि फाइबर, तो उसमें फाइबर में इनसॉल्युबल फाइबर भी होता है, सॉल्युबल फाइबर भी होता है। इनसॉल्युबल फाइबर इज वेरी हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग वेरी गुड बोवेल सिस्टम और इनर इकोसिस्टम। It is because of easy movement of these food items, because they are not soluble in the water. They will absorb the water content and they make it as soft nature, and it becomes very easy for digestion and other functions. Otherwise वो नहीं हुआ, insoluble नहीं है, बहुत ज्यादा soluble है तो भी यूजफुल है। soluble होने की वजह से क्या यूजफुल है, वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वाला accumulation कम होता। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या फैट कंटेंट बोलते हैं LDL फैट्स, वो कम, उसका अक्यूमुलेशन कम हो गया तो हमारा हेल्थ बेनिफिट बढ़ जाएगा। या कार्डियोवैस्कुलर डिसीज बोलते हैं, हार्ट रिलेटेड, या ब्लॉकिंग ऑफ योर वेन्स और ब्लड वेसल्स विल बी रिड्यूस्ड इफ द LDL cholesterol is lesser in your blood content. So these millets are rich in slow releasing carbohydrates. I already told, because of high dietary fiber content या polyphenolics, they will release the energy or glucose very slowly in your blood system. That prevents and controls the diabetes. And these are rich in antioxidants and phytochemicals which fights against the free radicals, or they act as scavenging of radicals. How? I will tell in the coming slides. They are rich in fiber that prevents the cancer, high in niacin that lowers the cholesterol, specifically LDL cholesterol, and they are high in calcium, iron, magnesium, and other minerals. They helps to maintain normal muscle strength and also to improve the nerve function. And alkaline foods, I already told, specifically the pearl millet based food products, they maintain alkalinity. That maintains pH and reduces the abdominal discomfort what we feel because of indigestion. That will be maintained or balanced because of alkaline foods. And they decreases the amount of triglycerides. These are the different kind of fatty acids. We should not have more amount of triglycerides in our blood. ज़्यादा है तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, हार्ट रिलेटेड डिसीजेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, या ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इसलिए हम ब्लड प्रेशर को या कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस को कम करना चाहते हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स को कम करना है। तो कौन कम करेगा, तो मिलेट्स। These are the millets, because of their polyphenolic compounds and antioxidant properties, they will reduce the amount of triglycerides in the blood. So coming to how these micronutrients are present in our millets. Carbohydrates which are in the milled grains, there are 3 different types they will be present. Free sugars ranging from 2 to 3%, and non-starchy polysaccharides called as dietary fibers. That is 15 to 20%, which is really higher when compared to other major cereals. And starch content is up to 60 to 75%. Non-starchy polysaccharides, that is dietary fibers, they contain cellulose, hemicellulose, and pectinaceous materials.
So they are comprised of these three things. And total dietary fiber includes insoluble dietary fiber and soluble dietary fiber. I already told importance of these soluble and insoluble dietary fibers. And coming to proteins, they are present in three fractions: albumin plus globulin fractions, prolamine plus prolamine-like fractions, and glutenin and glutenin-like fractions. Millets are having all these types of fractions of proteins in their grains. Along with other cereals are also having, but these millets are rich in prolamine. Specifically, foxglove millet is rich in prolamine, and others are rich in glutenin and glutenin-like fractions of proteins. And true digestibility of millet proteins varies from 95 to 99.3%, which the study was conducted in different human population. And fat content of these millets ranges from 1 to 5%. I already told about this. Then what is dietary fibers and polyphenols? What roles these two things are having? In most of my slides already I have explained, but still in detail some things I will tell. These dietary fibers are correlated with a reduction in blood cholesterol. Specifically, low density lipoprotein cholesterol is reduced, and sugar content, and also they lead to the good bowel movement. That means the movement of that soft insoluble dietary fibers in your intestine, that will become easy. That leads to a less strain to your intestine. So, and in also maintaining the inner health of your intestine in a very good manner, along with enhancing the microbial or microflora activity, which are having health benefits. Phytochemicals. Millets are rich in these phytochemicals, which are called as phytochemicals: polyphenols, phytosterols, phytoestrogens, lignins, and phytocyanins, etc. Many are there, many phytophenols are there, or phytochemicals are there, and these millets are rich with these phytochemicals. They protect against age-related degenerative diseases, which are called as age-related degenerative diseases, cardiovascular diseases, diabetes, cancer. They will come as the age progresses, as the habit of the diet changes over the years, or instead of changing, it maintains same monotony in diet over the years. If it continues, then monotony happens in many of the aspects, including your work culture, your exercising nature, your eating habit, many things. Not only food, it is many things it includes. Over the years, if it continues for long duration, then definitely cardiovascular disease, risk of cardiovascular diseases, diabetes and cancer will be increases in many adults and also aged persons. These phytochemicals are having functions as antioxidants, detoxifying agents, and also they modulate the immune system of your body. Bound phenolic compounds, they are also having different properties like antioxidant, anti-obesity. That means accumulation of large amount of fats, adipose tissues in your body, which leads to anti-obesity. That leads to obesity. To reduce that obesity, these bound phenolic compounds are required. And anti-diabetic, anti-tumorigenic, anti-carcinogenic, antimicrobial, antiviral properties. So yeah, they are having almost all very health benefiting properties. And why antioxidant property is considered as important? Because of its inherent ability to donate the hydrogen atoms to electron deficient free radicals. Free radicals will be produced because of their electron deficiency. Once they lose the electron, then they will become free radicals by jumping to the other radius. So if they become free radicals, then they are very dangerous in your body, because these will lead to the cell death or degradation of your proteins or DNA also. That's why free radical scavenging activity is present in antioxidants, which are there in millets. Polyphenols show inhibition of the activity of digestive enzymes, specifically amylase and glucosidase, and also pepsin, trypsin, and lipases, because amylase and glucosidase are involved in increasing the digestion of carbohydrates and accumulation without its utilizing it in the energy release. The flavonoids such as catechins, these are also having pharmacological activities as radical scavengers. That means reactive oxygen species scavengers. Then aldose reductase is one enzyme which leads to the accumulation of sorbitol in your blood, which leads to the diabetic induced cataract. That means reduction in eyesight of your eye lens. That polyphenolic compounds present in millets, they known to inhibit the aldose reductase enzyme activity. Thereby they reduces the cataractogenesis, or you are reducing the eyesight of eye lenses, so specifically aged people. So what are the roles of minerals? I told initially that मैं किसानों को बताना चाहता था कि ये मिनरल ज्यादा होने की वजह से क्या
यूज है। तो ये इसके होने की वजह से एक एडवांटेज है कि ये दे आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, स्पेसिफिकली कैल्शियम, फॉस्फेट, आयरन, दे आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स लाइक साइटोक्रोम, ऑक्सीडाइजेस, कैटालाइजेस and cofactors of many enzymes, and they are involved in oxygen transport also and electron transport activities also. For example, आप देख सकते हैं कि iron in the ferrous or ferric form, it is a cofactor of different enzymes like catalase, nitrogenase or cytochromes. Magnesium वो ज़्यादा हमें बोला था कि sorghum में ज़्यादा होता है, ज्वार में ज़्यादा होता है, तो वो खाने की वजह से आपको हेक्सोकाइनेज एक्टिविटी या डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी अच्छा होता है। मॉलिब्डेनम भी ज्यादा है कुछ मिलेट्स में, तो उसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजनेज, एक्सांथिन, ऑक्सीडेज, दीज आर द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डिफरेंट फंक्शनलिटीज ऑफ योर बॉडी एंड स्पेसिफिकली रेस्पिरेशन का या यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी इन योर बॉडी। तो जिंक का यूज होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स में। तो व्हाई आयरन इज कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर सिस्टम? तो आई ऑलरेडी टोल्ड इट इज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज एंड आल्सो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो इसका डेफिशिएंसी होने की वजह से एनीमिया होता है, मैं बोला था, और इट इज वेरी कॉमन इन वुमेन एंड चिल्ड्रंस। तो कैल्शियम का क्या रोल है? कैल्शियम को तो ऑलरेडी सबको पता है कि ये बोन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इसका रोल है, और बोन का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए या मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कैल्शियम रिक्वायरमेंट होता है, और कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन ज्यादा होता है विटामिन डी कंपोनेंट अवेलेबिलिटी की वजह से। तो फिंगर मिलेट को सबको पता है कि फिंगर मिलेट में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, इट इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ द मिल्क व्हाट वी ड्रिंक, इट्स 250 to 350 milligrams per 100 gram. So what are the other functionalities of millets? That is anti-obesogenic, that is anti-obesity, anti-tumorigenic properties, and also anti-hypertensive properties. Sorghum contains lesser of sodium and higher of potassium. These two things are very important for having reduced tension specifically in work culture. And tumorigenic already I told, because almost phenolic compounds which are present in millets, they also be effective in the prevention of cancer initiation and progression. In vitro studies have shown this, as 7 types of different millet extracts inhibited cell proliferation in the range of 28 to 100%. So I'll tell about celiac disease later. That is celiac disease, autoimmune enteropathic disease, which is comes to genetically susceptible individuals, where this gluten is considered as a foreign molecule, and the immune system will be whatever immune system is there in your body that responds to these gluten molecules are the food items. वो होने की वजह से आपका खुद का इम्यून सिस्टम फूड के लिए ही प्रॉब्लम करेगा, तो वो डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो दैट्स व्हाई द ग्लूटेन बिकम्स इनटॉलरेंट इन सम पीपल। सो इसलिए वो ग्लूटेन इनटॉलरेंट नेचर को हम बोलते हैं कि सीलियाक डिसीज। तो ये ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो गया तो हम नेक्स्ट क्या करना है? तो हमको अच्छी तरह से डाइजेशन नहीं हो रहा है यार भाई, चपाती खाने से या व्हीट बेस्ड या ग्लूटेन रिच फूड खाने से हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बोलो तो इसके लिए क्या करना है? तो ओनली ट्रीटमेंट फॉर दीज सीलियाक पेशेंट्स ऑफ द डिसीज कंटेनिंग पेशेंट्स इज लाइफ लॉन्ग स्ट्रिक्ट ग्लूटेन फ्री डाइट। तो इससे अच्छा है कि सीलियाक इंटॉलरेंट बनना ही नहीं, तो वही अच्छा है। तो इसलिए आपका फूड या प्लेट ऑफ फूड शुड बी डाइवर्सिफाइड। तो और एक अच्छा चीज मिनरल्स में मिलेट्स में है, दीज आर द सोर्सेस ऑफ गाबा। गाबा का मतलब होता है कि गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। दिस इज अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड फ्री अमाइनो एसिड। दिस गाबा कंटेंट इंक्रीज ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ये पर्टिकुलर ब्यूटेरिक एसिड है या गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड है, इसका ज्यादा जर्मिनेशन, आप मिलेट्स का ग्रेन को जर्मिनेशन करके बाद में उसको फ्राई करके या रोस्ट करके दूसरा प्रोडक्ट बनाने में यूज कर लिया तो गाबा कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। तो वो गाबा कंटेंट ज्यादा होने के हमारे को क्या एडवांटेज है? तो न्यूरो ट्रांसमीटर, यूर ब्रेन फंक्शनैलिटी विल बी इंक्रीज्ड। एक एग्जांपल है स्टडी का, गाबा कंटेंट इन बानन मिलेट इंक्रीज्ड फ्रॉम 6.36 milligrams per 100 gram to 35.7 milligrams. So GABA directly affects the personality and the capability of a person to manage the stress and acts as the neurotransmitter in the brain. So nowadays one more very important concept is coming, that is bioactive millet peptides. These are similarly whatever nutritional compositions of millets are there, they are specifically protein peptides. They are having different roles. They are playing different roles like anti-cancer activity because of inhibition of the HEP-G2 gene or MCF7 gene and WRL68 cell proliferation genes.
Specifically, they will reduce the cell proliferation. That's why they are treated as anti-cancerogenic. And antimicrobial, already I have explained these activities like anti-diabetic and all those things. What not? Whole grain phytochemicals, they are whole grain of millets, they are all rich sources of phytochemicals. Starting from my presentation, I am telling that these are rich in phytochemicals. So we are producing different millet-based functional foods, and we have developed it, and technologies available with us. When you can come and you can take these technologies by taking trainings, and if you want to become an entrepreneur to produce these different products from millets and sell it, then also we are ready to sell our technology through licensing. Jawar not only used for making rotis or bread, they can be used for making rava, should be used as khichdi making, upma rava, idli rava also available. We can prepare idli also from jawar. And ready to eat and ready to cook millet products are also available. That's sorghum biscuits, millet pasta, millet vermicelli. Initially, we saw these things only from rice and wheat. Whatever products we can prepare from rice and wheat, now we can prepare from millets, all millets, without gluten. Very important. So these are the different millet recipes. These are prepared from, so only purely prepared from millets. You can see here, we can prepare dosa also, idli also, payasam also, laddu also, whatever you think from other major cereals. So what we are doing to promote these millets? So Government of India has already announced mission on millets in different states. And now Government of India is classifying these millets as nutri-cereals. And we are trying a lot to introduce these millets in public distribution systems. And now International Year of Millets is coming in 2023. We are already on the way. We are working a lot to celebrate this International Year of Millets. And also we have celebrated National Year of Millets in 2018. Neelan TBI is there, which is already promoting entrepreneurial activities and also incubating many technologies and entrepreneurs or companies which are producing different millet products, and they are selling based on their health benefits. Government of Kerala has announced a Millets Village program. Karnataka is conducting many national and international fairs, and ICRISAT has announced smart food campaigns, and MS Swaminathan Research Foundation is promoting millets and also involved in policy sensitization. So thank you very much for your patient listening, and we are here to ensure the legitimate place for millets in the global food basket. सभी किसान साथियों को मेरा निवेदन है कि आपको कुछ कल्टीवेशन के बारे में जानकारी जानना चाहते हो तो मैं उसका कल्टीवेशन के बारे में बोल दूंगा. तो अभी सबको धन्यवाद ये सुनने के लिए. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much. That was a great presentation, very informative one, and I'm sure that we explained about the future of the soil now. And thank you so much for thanks a lot. Now I would like to welcome Dr. Sudhir Singh Bhargava, who is Assistant Professor of the Department of Applied Agriculture. So, नमस्कार, सत श्री अकाल. मैं सुधीर सिंह भार्गवा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाब को बिहाफ में आज के इस कार्यक्रम के वर्ष में सबसे पहले हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद तिवारी सर को धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ. तो उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन की वजह से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा सका. मैं प्रोफेसर अंजना मुंशी मैडम तो हमारे डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और हमारे डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनके लगातार समर्थन और सहयोग की वजह से हम इस कार्यक्रम को कर सके. और मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर अमर सुधा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे बीच मिलेट्स जो हम मोटा अनाज बोलते हैं उसकी महत्वता बताई कि भाई जिस तरीके से हमारी इस भारतीय रोटी जिंदगी में हमारी जीवन शैली पूरी तरीके से बदल गई. इस बदलाव की वजह से हमारी खाने की थाली से लेकर खेत तक ये मिलेट्स और अनाज गायब हो गए. तो हमें अभी चेंज लाना है. इस चेंज के लिए सरकार भी काम कर रही है. जैसा कि सर ने बताया कि यूएन ने 2030 जो हमारा अगला साल है वो मिलेट ईयर घोषित किया है. तो हमारा डिपार्टमेंट भी लगातार
आने वाले अगले कई महीनों में मिलेट से रिलेटेड कई और गतिविधियां भी करेगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा सर का कि उन्होंने हमारे बीच मिलेट की आवश्यकता और उसकी महत्ता के बारे में बताया। मैं गांव से बता रहे प्रधान जी और गणमान्य नागरिकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, हमारे कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं कंप्यूटर सेंटर से मनदीप जी जिन्होंने इस पूरे ऑनलाइन और यूट्यूब के लिए हमारा सहयोग किया, उनका भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे विभाग के साथी डॉक्टर शिवानंद पाटिल, डॉक्टर किलान शेखानी और गगनदीप मैडम और पीएचडी स्कॉलर्स और सभी छात्रों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया। और मैं ये आशा करता हूँ कि आगामी कार्यक्रमों में भी छात्र और पीएचडी स्कॉलर्स और गांव से सभी गणमान्य नागरिक हमारे बीच रहेंगे और हम कार्यक्रम को इसी तरीके से आयोजित करते रहेंगे। अंत में परंपरा है कि हम किसी भी कार्यक्रम का अपन हमारे राष्ट्रगान और नेशनल एंथम के साथ करते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि बाहर आप सभी का चाय समोसा एंजॉय कर रहा है, तो इस कार्यक्रम का अभी अपन है और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँ कि आप अपने स्थान पे खड़े हो ताकि हम नेशनल एंथम के लिए आप सभी स्थान पे हाँ होता है।